Okay, we'll be reacting. Let's react. But you have to come back and your lines have to be tighter than your jeans. I was expecting my first child. I was told, but you have to come back in shape quickly. Newsrooms are full of predators. Okay, आवाज हमने कुछ ज़्यादा ही कर दी है. She's very popular, right? हमारे Beyond पे and everything. And this video went quite viral recently. Of course, मैं काफ़ी late react कर रहा हूँ. As you know, late reactorों में से आता हूँ मैं. इंडिया के top late reactors channels में number 1 channel मेरा है. So if you didn't know, now you know. I've seen senior women journalists also commenting on attire of women journalists. And you know, it's hurtful. It is. And women get it more. I'm sure you have also, you know, ऐसे वाले earrings पहन के आ गए, ऐसे वाले कपड़े पहन के आ गए, जैकेट क्यों नहीं पहना, इंडियन क्लोथ्स क्यों पहना, बिंदी क्यों नहीं पहनी, बिंदी क्यों पहना. These are what? Please listen to the content. No, they're not listening to content. It's how you're attired. A lot of these rules apply only to women. We are supposed to look a certain way. Men clothing में कोई इतनी रेंज है ही नहीं as terms of तुम्हारे presenting में. You know, it's I think in general तुम्हारा suit. We're supposed to, if we are too soft and smile too much, then we are diffident. If we are too aggressive, then we are rude. There's never a good fit. I think over the past few years, one by one, I've thrown all the rules out of the window. I want to wear jhumkas with a jacket, I will wear it. You don't like it, don't watch it. There was a situation when I was told to take somebody off air because of weight, and she was miserable, and she'd gone through some issues health-wise, and she said, I'm working on it, and I knew she's working on it. But this happens. I remember when I was expecting my first child, and I you know, told my boss about it. I was told, but you have to come back in shape quickly. And the congratulations followed later. And he was not a mean person, but this is how they are programmed. I remember my daughter was, I think, a year old, and she had an acute ear infection. And she was crying. I said, I have to go to work. And everyone said, okay, she'll be fine. But I reached office, I got ready for the show, and the headlines rolled. And after the first headline, I started crying. Okay. And because I was not on air, and the team was very good, and the PCR guys, they went into a break. And I said, I know she's fine, but I just don't like being here. And you know, for weeks, I worried that I may have appeared as less committed to my work because I did this, because no man would ever sit in a studio and cry and say, I have a sick child at home. People who do karobar. Well, here's the difference, I think. A lot of men would, but a lot of men then would not be in that place. Because तुम जब भी एक hyper competitive environment में चले जाते हो जहाँ पे people who, for very few positions, a very high percentage of people are competing. तो हो क्या जाता है, people who get chosen for those selected few jobs are those who are willing to compromise over very important aspects of their lives. So to say not all men, the problem is those men are not doing something very great either. अगर वो अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, वो बिकॉज हाइपर कंपेटिटिव मेल्स के साथ या हाइपर कंपेटिटिव पीपल के साथ अगर आप उनकी लाइफ थोड़ी सी पढ़ना चाहोगे, आपको लिटरेचर रिव्यूज़ पढ़ने हैं रिसर्चेस में, इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स में यही प्रॉब्लम होती है कि ये इतने ज़्यादा अचीवमेंट बेस्ड होते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स इनकी लाइफ के एक्चुअल में ज़ीरो होते हैं. इनके प्रॉब्लम फैमिली से रिश्ते कहीं बहुत ही मतलब आपको हिले ढिले मिलेंगे. दे आर नॉट वेरी कमिटिंग टूवर्ड familial relationships. हो सकता है उनकी बहुत लास्टिंग अच्छी वैसी फ्रेंडशिप्स ना हो सकते, उनके सोशल सर्कल्स वैसे ना हो सकते, उनकी लाइफ में रिलैक्सेशन बहुत कम हो, बट उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से वायर्ड है और जो उनको लगता है या फिर वो बिलीव करते हैं कि पर्पस जो उनको दे रहा है ज़िंदगी में, इट इज़ दिस परस्यूट, तो वो फिर उसी में ही घुसे रहेंगे. एंड दिस इज़ अ वेरी स्कैरी जोन बन जाता है उस इंसान के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पे बात हो जाती है ना कि कहने की द कॉम्पिटिशन एक डेफिनेशन क्रिएट कर देता है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जब
6 लोग आपसे पहले जो आए हुए हैं, जिसने सीट ऑक्यूपाई करी है, उन्होंने एक तरह का बिहेवियर पैटर्न क्रिएट कर डाला है, तो वो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं जनरलाइज नॉर्मलाइज, यानी कि ये सेम एक्सपेक्टेशन एक कैमरामैन पे अप्लाई नहीं कर रही प्रॉबेबली। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी जॉब्स स्टूडियो के अंदर आपको दिखेगा, बहुत सारे लोग जो कि रिप्लेस कर रहे हैं, और लोग भी हायरिंग चल रही है, वो छुट्टी पे भी जा सकते हैं, उनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी एज कंपेयर टू कुछ लोगों के पास जो कि उनको वही लोग शाम को 6 बजे दिखने ही दिखने हैं उस चैनल पे। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप उन पैटर्न्स में चले जाते हो जो पुराने लोग सेट करके गए हैं, और अगर वो पैटर्न उन्होंने सेट किए हैं कि भाई चाहे आग लगी हो चाहे तूफान आया हो, मैं बैठा होऊंगा, मेरा वर्क एथिक ये है, और मैं फीड करता हूं, तो मुझे 12 बजे तक बैठा लो, मैं बैठा हूं, और मैं 12 बजे तक तुम्हें परफॉर्मेंस भी दे दूंगा, तो फिर बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो जाता है वो पैटर्न्ड बिहेवियर में, जिसमें क्या हुआ, एक सिस्टम अब एक क्रिएट हो गया है, जिस सिस्टम को लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया। तो स्टूडियो में ऐसा नहीं है कि वो इंसान, जितने लोग भी नए हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि अबे ये गलत है कि अगर एक माँ, क्योंकि घर में बच्चा बीमार है तो माँ को घर होना चाहिए। दिस अलोन एज अ कॉन्सेप्ट परफेक्टली मेक सेंस टू एनी ह्यूमन बीइंग जो सुन रहा है, कॉमन सेंसिकल है ना भाई, कौन वरी नहीं करेगा, कौन बाप इन जनरल, अब कोई साइको इंसान है जिसको ये कि बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऐसा दिमाग आपका तो अलग ही बात है, बट इन जनरल अ लविंग पेरेंट वुड नॉट फील इंटेंसली इमेंसली वरिड कि उनका बेबी की तबीयत खराब है, कि वो चेक कर रहे हैं हर 1 घंटा हर 2 घंटा, अगर वो फिजिकली पास नहीं है, स्पेशली अ मदर, स्पेशली अगर 1 साल का बच्चा है, मदर की तो बात ही छोड़ दो। People who do karobar are promoted faster. I don't do it. So then I will never be. Explain this now. Karobar. Those who don't know, yeah. Karobar is a bar in a car in the simplest of terms. After your shift ends, you stand outside in the parking lot, put your glasses on the roof of your car, drink, chat, gossip, and then go home. It is unsafe because a lot of people are drinking and driving, and it happens. Holy fuck. I cannot explain how dangerous it is, and I understand because probably इतना ज़्यादा तुम जब used to हो गए हो एक इंडस्ट्री में कि एक चीज़ चल रही है, हमें लगता है नॉर्मेटिव है, तो हम सिर्फ ऐसे बोल देते हैं it is unsafe. It's not just unsafe. It is a miracle अगर आपने लोगों को नहीं उड़ाया है। अपने आप तो छोड़ दो, वो इंसान मुझे तो दुनिया का सबसे वाहियात इंसान है जो ड्रिंक करके चूज करके कर रहा है मैं ड्राइव करूंगा। तुम बहुत वाहियात इंसान हो, क्योंकि तो अपनी जान की तुम्हें परवाह नहीं है। चलो ठीक है, तुम पता नहीं किसी का जिसका कोई मतलब नहीं था, दिन में बस वो कहीं कुछ काम किसी चक्कर में निकल गए अपने घर से, तुम किसी पूरी परिवार को तबाह कर दोगे। पर बहुत डरावना फाइन होना चाहिए, एक सोसाइटी में डर क्रिएट करना चाहिए इस चीज़ का, ताकि ये चीज़ कोई करे नहीं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ही अभी भी देखता हूँ मैं, अपने चाइल्डहुड में बहुत देखा लोगों को करते हुए कि पी के चला रहे हैं कार और हम चलाएंगे। दिस फकिंग माचो नॉनसेंस, चूते के घोड़े। It's part of the newsroom culture, I believe. And it's a great place to bond. I have never done it in 2 decades. And there was a time when I felt that I'm not going to that smoking room and I'm not doing karobar. I'm being left out everywhere. You remember the Me Too movement and all. You think that men have learned after that these are the boundaries you don't? I don't think so. No? I don't think so. And Me Too is we in the media tell everyone else how to conduct themselves. This is what the society should be like. This is how judges should be selected. This is how netas should be. We hold truth to power, but we don't face our own truths. Newsrooms are full of predators. इसलिए कहते हैं नेवर मीट योर हीरोज, समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं, हम भी आपको बताते रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बैठे हैं, हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत ज्ञान पेलते हैं आपसे, उनके पीछे एक कर्म सुन लोगे, या फिर उनके अगल बगल वाले यूट्यूबर जिनके साथ उन्होंने एक कर्म किए हैं, वही अगर अपना मुंह खोल दें, बट भैया ना वो सोसाइटी ऐसी हो जाती है, फिर वहाँ सब अपना मुंह बंद रखते हैं। इसी सोसाइटी में जहाँ पे लोग आपको बहुत ही कूल एजुकेशन, आई एम वेरी क्वालिफाइड गाइज एंड आई स्पीक इंग्लिश करके बहुत अब मच्योर खेलते हैं आपके साथ, और बहुत उनके कर्म सुन लोगे ना पीछे, खून के आंसू आ जाएंगे, कान आपका हो जाएगा, क्या ये इंसान भक्षी है? हमें तो लग रहा था सिर्फ नार्सिसिस्ट है, तो भक्षी निकला, भक्षी बैठे हैं। And some of those who were let go of
are back in positions of power, are being legitimized in more ways than one. And what are we doing about it? You walked out at one point of time. I'm not going to mention names, but I think many people know. You walked out when you couldn't take that a person who was labeled a predator. Do they come with a certain learning when they come back after they have gone through the shame of being called a predator? I don't know. And I don't think it matters. You have wronged so many people. And why should you get the benefit of the doubt now? That is one. And second, I don't think they change fundamentally. This person you're talking about, someone told me that she was his subordinate in a newspaper, and she went to him and said that, this is my script. And he said, your lines have to be tighter than your jeans. Jeez. You get away with it. How do you get away with that? And what do you do to the confidence of that girl? And we let them be and we give them space. Because a lot of us don't want to be branded as trouble. About 15 years back, I went to the studio after a big interview had just finished with a very prominent minister. And the studio had different sets, so I had to do the news from another set. And the editor is asking the minister, would you like tea or coffee? He's not replying. He's not replying because he's staring. And it was a big newsroom, and he kept staring, and I felt violated without him having said anything, without him having done anything. How do you quantify that? Yeah. And what do you say? That he was looking at me? I don't think it's gaze. Gaze is such a delicate word. You're gazing, across, like तुम आसमान को गेज कर सकते हो, सनसेट को गेज कर सकते हो. दिस इज नॉट ए गेज. ये तो एक पियर्सिंग चीज हो गई ना. ये एक चीज हो गई जो कि तुम्हारे ईथर जिसे कह सकते हो, एयर कह सकते हो, इसको पियर्स करते हुए आपको फिजिकली काट दे. ये एक इतनी इंटेंट रिडन, इतनी ज्यादा इंटेंट है इसमें कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्लियरली बोल रहा है मैं क्या ABCD से भी क्लैरिटी में करना चाहता हूं. द पर्सन इज सेइंग ये है मेरी पावर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और तब भी मेरा कुछ नहीं होगा, और इसके बाद भी तुम इंटरव्यू में वापस आओगे. एंड ये 100% एक्सप्रेशन ऑफ पावर है, एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेशन है. But you feel terrible.